Welcome students to the digital class of mathematics. Today in our fourth session of chapter number 8, comparing quantities, we will be discussing about simple interest, compound interest and questions related to same of exercise 8.3. So now let's see first simple interest. We have already learned simple interest in class 7 that SI simple interest is equals to P into R into T upon 100, where P is the principal, that means the money you borrow, R is the rate of interest charged on it, and T is the time taken. So we say that amount is equals to principal plus SI, right? Again, SI is equals to P into R into T upon 100, where we know that P is the principal, the sum which we have borrowed, R is the rate of interest, T is the time taken. So amount is equals to principal plus simple interest. Now students, in SI, the interest is calculated on principal. So the interest is same for all the years. Now let's see what is a compound interest. Compound interest, may we say that amount is equals to principal into bracket 1 plus rate upon 100 raised to the power n. Again, amount is equals to principal into bracket 1 plus rate upon 100 raised to power n, where A is the amount which you need to pay, P is the principal, the sum you borrowed, R is the rate of interest charged on it, and n is the time taken. So then what is the compound interest? Compound interest is equals to amount minus principal. Now in CI, the interest is calculated on amount of the previous year. So interest is different for all years. Again, in CI, the interest is calculated on amount. आपका interest किस पे लग रहा है? Amount पे लग रहा है. That is why amount of the previous year. So the interest is different for different years, and in SI the interest is calculated on principal. So interest is same for all years. Now students, in the exercise 8.3 there are different cases of compound interest. So these cases can be categorized as case number 1. That means case number 1 is compounded annually का case. कौन सा केस होता है? कंपाउंडेड एनुअली. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, इन दिस एक्सरसाइज, कंपाउंड इंटरेस्ट के ना बहुत सारे केसेस होते हैं. एक होता है केस 1 कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आपका टाइम कंप्लीट ईयर्स होते हैं, राइट? टाइम क्या होता है? कंप्लीट ईयर्स. दैट मीन्स आपके पास टाइम या तो 3 ईयर्स होगा और 4 ईयर्स होगा और 2 years होगा. That means if you see this question, calculate the amount and compound interest on rupees 10,800 for 3 years at 12 1/2% per annum compounded annually. तो केस तो ये हुआ compounded annually का. फिर हमने चेक किया इसका टाइम. टाइम क्या है इसमें? 3 years. That means complete years का केस है. क्लियर? नेक्स्ट केस होता है केस नंबर 2, which is again compounded annually. This case is also compounded annually, but here the time is incomplete. Incomplete years होते हैं, or you can say the time is in fractions. That means it can be, if you see here, question number 2. Calculate the amount and compound interest on rupees 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually.
केस आपका कौन सा है? कंपाउंडेड एनुअली एंड टाइम हियर इज 2.5. दैट मीन्स आपके पास या तो 2.5 years हो सकते हैं और दे कैन से 3 years 4 months. तो कंप्लीट ईयर्स नहीं है ना इन केसेस में. सो देर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट. ओके, नेक्स्ट केस हम इसमें कहते हैं केस नंबर 3, जिसमें आप कहते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस है. दैट मीन्स इसमें जो आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है वो आपका हाफ ईयरली पे होता है, आधे साल बाद. सो इन दैट केस, दैट इज द केस कंपाउंडेड हाफ ईयरली. आपको इसमें इससे पता चल जाएगा, राइट. कंपाउंडेड एनुअली में दो केसेस हो जाते हैं, वन फॉर द कंप्लीट ईयर्स, अनदर वन फॉर द इनकम्प्लीट ईयर्स. और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेथड डिफरेंट होता है. क्लियर? कंपाउंडेड एनुअली का भी मेथड डिफरेंट होता है. नेक्स्ट केस बनता है इसमें केस नंबर 4, जो आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है. दिस केस इज देयर इन योर आरएस एंड द केस इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. Clear? This is the case of compounded quarterly. 4 cases होते हैं. Again I am telling the cases. First case is compounded annually with complete years. Right? या तो 2 साल, 1 साल, 3, 4 साल गिवन होंगे. नेक्स्ट केस आपका बनता है कंपाउंडेड एनुअली का, बट उसमें इनकम्प्लीट ईयर्स होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में देखोगे, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं केस नंबर 3 कंपाउंडेड हाफ ईयरली, and fourth case which is not there in your NCERT but it is there in your RS, compounded quarterly ka case. So class, today in our this session we will be only discussing the compounded annually case of complete years. That means case number 1. We will be discussing case number 1. So now let's see exercise 8.3, question number 1. Calculate the amount and compound interest on rupees 10,800 for 3 years at 12.1/2% per annum compounded annually. तो सबसे पहले हमने देखा ये है केस कंपाउंडेड एनुअली का. कंपाउंडेड एनुअली के बारे में फटाफट से देखना है टाइम क्या है. टाइम कंप्लीट ईयर्स है 3 years. तो ये आपका केस नंबर 1 हुआ. तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो. देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला. So what you need to find out? Amount and the compound interest. But before that you need to mention principal, rate and time. So principal is equals to rupees 10,800. Time is equals to 3 years. And rate is equals to 12.1/2% per annum compounded annually. Okay. So you will write down 12.1/2% means 12 2s are 24, 24 plus 1, 25/2% per annum compounded annually. So first we need to find out the amount. Amount formula is P into bracket 1 plus rate upon में 100 raised to the power n. Right? So now let's substitute the value, which is equals to rupees 10,800 into bracket 1 plus 25/2 is the rate, and now we can multiply this with 100. We are substituting the value of rate here as 25/2 and then we'll multiply it with 100 raised to the power time is 3. Now 25 ones are 25, 25 fours are 100. See student, this 100 2 zeros and 800 2 zeros will not get cancelled क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट की पावर है. तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, देन इट्स पावर एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10,800. अगेन पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 25 ones are 25, 25 fours are 100. So what we are left inside the bracket now? 10,800 into 1 plus 1 upon 2 into 4 is 8 raised to the power 3. Now let's take the LCM inside the bracket. It will be 8. Now here we will write down 8 plus 1 raised to the power 3 because we can take the LCM.
So we can write there as 1 and 8 LCM will be 8. Right? Now 8 plus 1 कितना होता है? 9. So this will become 9 by 8 whole raised to the power 3. So 9 by 8 whole raised to the power 3 means we can write the 10,800 multiply with 9 by 8 into 9 by 8 into 9 by 8. So now this 8 and 10,800 will directly get cancelled on the table of 8, क्योंकि 8 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो तो लास्ट के अगर 3 डिजिट्स डिविजिबल होते हैं तो 800 इज डिविजिबल बाय 8, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. सो 8 1 जा 8, सो इट विल बी 8 1 जा 8, बचा कितना 2, तो 28 बन जाएगा. एंड 8 3 जा 24, बचा कितना 4, 40 एंड 8 5 जा 40. तो ये आपका आ गया 13500. नाउ दिस एंड दिस विल नॉट गेट डायरेक्टली कैंसिल, 8 पे नहीं जाएगा तो 2 पे कट कर देते हैं. नाउ 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 and 2 5 जा 10. Now nothing will get cancelled here. So what we are left with? Rupees 675 into 9 into 9 into 9. 9 9s are 81. 81 into 9 is 729 upon में 4 8s are 32. So now if you multiply 675 with 729, you will get the answer 4,92,075 upon में 32. Now you need to divide. On dividing it, you will get the answer 15,377.34. ये आगे continue होगा, but we will only take up to 2 decimal places. So this is the amount we are getting now, right? So we have already found the amount, तो हम amount को एक bracket में डाल लेंगे. Now what else we need to find out? Amount and the compound interest. तो compound interest का formula क्या होता है? Amount minus principal. So now let's subtract. So amount is rupees 15,377.34 minus rupees 10,800. जब आप माइनस करोगे it will be 0.34 and 77. This will become 13. 13 minus 8 is 5. This will become 4 and 0. So 4,577.34 is the compound interest. 4,577.34 is the compound interest and our answer. Is it clear? Now let's see question number 3 of exercise 8.3, again based on the same concept. Fabina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. मतलब there is a girl named Fabina जिसने 12,500 रुपए borrow किए. So that borrow amount will be the principal. Rate is 12% per annum, 3 years के simple interest पे. मतलब इस पे हमें SI लगाना है, right? And Radha borrows the same amount. Same amount means principal is 12,500 for her for same time period. मतलब उसका time भी 3 years हो गया, but for 10% per annum compounded annually. तो ये है केस compounded annually और time है 3 years. That means case number 1. What you need to find? Who pays more interest? किसने ज़्यादा interest दिया? अगर आपने 3 साल के लिए same amount, same principal, मतलब same amount कहने का मतलब था कि आपने same money borrow करी, ठीक है, but एक ने borrow करी 12% के simple interest पे और दूसरे ने borrow करी 10% per annum के compounded annually के केस के लिए. So किसने ज़्यादा interest pay किया और कितना ज़्यादा interest pay किया, we need to find it out. So let's see the first Fabina one. तो फेबिना के केस में प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 12,500. शी बोरो at the rate of rupees 12% per annum at simple interest, right? The time is 3 years.
तो हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट. तो वी नो दैट SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100. So this is equals to rupees 12,500 into 12 into 3 upon 100. 0 0 0 0 cancel. We are left with rupees 125. मतलब 125 into 12 into 3. That means 36. So now let's multiply 12 into 36. We will get the answer as 4,500. मतलब कितना इंटरेस्ट फेबिना ने पे किया, अगर उसने 12,500 रुपये बोरो किए, 4,500. नाउ लेट्स सी फॉर राधा. सो फर्स्ट वी हैव टू मेंशन P, R and T. सो P is same, that is 12,500. Same time period, that means N will be 3 years and rate is 10% per annum compounded annually. Right? We always have to mention here compounded annually और compounded half yearly का केस होगा, quarterly का केस होगा, रेट के साथ जरूर मेंशन करें. Now compounded annually में पहले हमारा क्या निकलता है, अमाउंट, और फिर हम उसके बाद निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन में 100 raised to the power n. So what is the principal? Rupees 12,500 into bracket 1 plus rate is 10 upon में 100 into 3. Same, first we will solve the bracket, फिर हम उसकी पावर सॉल्व करेंगे and then we will multiply it with 12,500. So 0 and 0 cancel. What we are left with now? That is rupees 12,500 into 1 plus 1 upon 10 raised to the power 3. Now if I take the LCM inside, it will be 10 here and 10 plus 1 raised to the power 3. So this can be written as 12,500 into 10 plus 1 is 11 upon 10 raised to the power 3. Raised to the power 3 matlab we need to write down 11 by 10 3 times. So 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. 0, 0 cancel. This 0 and this 0 also cancel. Now what we are left with? Rupees 125 into 11 into 11 into 11 is 1331. We know the 11 cube. 11 into 11 is 121 and 121 into 11 is 1331. This will be upon 10. Do not cancel them. क्योंकि अगर आप इनको कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी. सो एक डेसिमल लगाना आपका मोर इजी है. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 125 with rupees 1331. On multiplying you will get 1,66,375 upon 10. This can be written as 16,637.5 and we know that क्योंकि ये रुपीस का केस है तो ये 50 हो जाएगा, 50 पैसा. up to 2 decimal places तक हम लिखते हैं, right? So this is the amount 16,637.50. अब हमें इसका क्या निकालना है, इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, which is rupees 16,637.50 minus rupees 12,500. Now let's subtract. So it will be 0.50 and 37 same. 6 minus 5 is 1 and 6 minus 2 is 4. That means 4,137.50 is the compound interest in case of Radha. So फेबिना का आपके पास इंटरेस्ट कितना दिया, फेबिना ने 4,500 और राधा ने कितना दिया 4,137.50. सो हु पेड मोर इंटरेस्ट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना ने. एंड बाय हाउ मच, दैट मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. सो वी विल राइट डाउन हियर फेबिना paid more interest
and by how much के लिए we need to subtract both the interest. So 4500 minus 4137.50. So let's subtract. So it will be 50. It will become 9. 9 minus 7 is 2. It will become again 9. 9 minus 3 is 6. It will become 4. 4 minus 1 is 3. And 4 minus 4 is 0. That means 362.50 more interest Fabina had paid. Clear? Now let's see exercise 8.3, the last question related to the same concept. I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Again, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. मतलब मैंने 12,000 रुपये 6% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लिए और ये इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे. Had I borrowed this sum, अगर मैंने यही पैसा मतलब 12,000 रुपये 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए होते, सो व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे. तो मैं कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा होता, राइट? मतलब आपको एक बार निकालना है फॉर द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से और एक बार आपको अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट से. फिर आपको कंपेयर करना है कि मतलब कंपेयर नहीं करना, आपको ये बताना है कि मैंने कितना एक्स्ट्रा पे किया अगर मैंने वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट से पे करी होती, राइट? सो लेट्स फाइंड इट आउट. द फर्स्ट वन, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से पे किया होता तो मैं ऊपर हेडिंग लिख देती हूँ. आई विल राइट डाउन हियर सिंपल इंटरेस्ट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000. Time is equals to 2 years and rate is equals to 6% per annum simple interest. निकालना मुझे अमाउंट है. So first we will find out this SI, which is P into R into T upon में 100. That means 12,000 into the rate 6 time 2 upon में 100. 0 0 0 0 cancel. What we are left with? Rupees 120 into 6 2s are 12, right? Now 12 into 12, 12 square is 144 with 1 0, right? So that is the interest, which is 1,440. So what will be the amount? Amount का formula क्या होता है इस केस में? Principal plus SI. Principal is rupees 12,000. You need to plus 1,440. So what is the amount? The amount will be 13,440, right? ये आपने amount calculate कर दिया in case of simple interest. You need to find it for compound interest also. तो हम यहाँ लिख देंगे compound interest. So in that case, principal is same, which is 12,000. Time is same, which is 2 years. Difference क्या है? Rate में. Rate भी आपका same है. R is equals to 6% per annum compounded annually. Right? So what we need to find out the amount? So amount का formula क्या होता है? Principal into bracket 1 plus rate upon 100 bracket close raised to the power n. So what is the principal given? 12,000. So we'll write down here rupees 12,000 into 1 plus rate is 6 upon 100, time is 2 years, right? So now let's solve the bracket first. Now 2 3s are 6, 2 50s are 100. तो कितना बचा ब्रैकेट के अंदर? 1 plus 3 upon 50 by 2. Now we will take the LCM inside the bracket. It will be 50 and here we will write down 50 ones are 50 plus 3 power 2.
Now 50 plus 3 कितना हो जाता है आपका 53. So it will be 53 by 50 whole raised to the power 2. Now open the power, it will become 12,000 into 53 upon 50 into 53 upon 50. This 0, 0 cancel, this 0 and 0 cancel. Now 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 fours are 20. So what we are left with? We are left with rupees 24 into 53 into 53 upon में 5. Now let's multiply the numerator. You will get 67,416 by 5. Now let's divide. So it will be 6 ones are 6, 17, 5 ones are 5, बचा कितना 17. Now 5 threes are 15, 24, 5 fours are 20, 41, 5 eights are 40, बचा कितना again 16, 5 threes are 15, बचा 1 and then 10. 2 हो गया and a decimal here. So because decimal है तो आपको up to 2 digit places तक करना ही पड़ेगा. So that means 13,483.20 is the amount. तो आप कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? आपने यहाँ पे अमाउंट पे किया था सिंपल इंटरेस्ट से 13,440 और यहाँ पे कर रहे हो 13,483. So how much more amount you are paying? So more amount आपका कितना हो जाएगा? That is rupees 13,483.20 minus rupees 13,440. So let's subtract what you will get. 20, 3, 4, 0, 0, 0. That means rupees 43.20. अगर उसने वही पैसा सेम रेट पे सेम इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर पे करा तो उसको कितने रुपीस एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं 43.20. Is it clear, student? So now in your homework you need to write down both the formulas of simple interest and compound interest. Then you will start writing the exercise. आप वो वाली sheet मत लिखना बीच में where I have explained you the different cases like case number 1 जो compound interest with complete years of time है. The next case remember is the compound interest but with incomplete years. Third is half yearly का case. Fourth is quarterly का case. So in our next session we will be learning the compound interest case of incomplete years. Thank you, students.